ముగించుకుంటాను. జై హింద్. గౌరవ సభ్యులు మీర్ జుల్ఫికర్ అలీ. मोहतरम स्पीकर साहब, आज मैं अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से और मेरे सदर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से और हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुखन्ना तेलंगाना असम्बली व MLA की जानिब से आज मैं यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ, बड़े गम के साथ इस बहस में जो हमारे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल के मौके पर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर मरहूम मनमोहन सिंह साहब साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बड़ा तेलंगाना के लिए, तेलंगाना की आवाम के लिए आज जो हम यहाँ तेलंगाना असेंबली में बैठे हुए हैं उसके लिए, तेलंगाना को बनाने के लिए एक अहम रोल उन्होंने अदा किया। और ना सिर्फ ये बल्कि उनके 10 साल के सुनहरी दौर में हिंदुस्तान को डॉक्टर सिंह took countless initiative to transform India into economic powerhouse and to ensure the all-round development of the people, including scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and economically weaker sections. इस तरह के कई काम इन्होंने अंजाम दिया। प्राइम मिनिस्टर रहकर भी ऐसे कई काम इन्होंने अंजाम दिया। फाइनेंस मिनिस्टर रहकर भी इन्होंने बेहतरीन काम अंजाम दिया। जिस भी ओहदे पे फायज रहे, गवर्नर RBI के रहकर भी इन्होंने काम किया। मैं अगर यहाँ पे दोहराना शुरू करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। Among his many achievements that led to revolutionary changes in the country are enactment of Right of Information Act 2006, Right of Education Act 2009, MNREGA and National Food Security Act 2013. Dr. Singh is considered as the architect of the economic reforms of otherwise known as the liberalization, privatization and globalization as a Union Finance Minister during 91 to 96. His contribution to the country as Governor of RBI and Deputy Chairman of Planning Commission as quite insignificant. I would like to confine myself to recalling his momentous contributions for the 6 minority communities: Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and Parsis. It was during his tenure that Minority Affairs Ministry was formed during 2006 January. मैं कहना चाहता हूं कि ये इसके लिए 2005 में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत में एक डेलीगेशन माइनॉरिटी MPs का प्राइम मिनिस्टर के पास जब गया और उनसे डिमांड रखी कि माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री कायम करना चाहिए ताकि मुसलमानों के लिए और जितने माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान के, उनके लिए काम अच्छे से अच्छा होना चाहिए, डायरेक्ट अगर कोई मिनिस्ट्री रही तो इसके ऊपर उन्होंने सुना और सबसे पहले उन्होंने एक्शन लिया। और रिस्पॉन्डिंग टू डिमांड द यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए न्यू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर in January 2006. And I may recall that Dr. Anthony Ererema became the first minister to lead the ministry. उस वक्त इन्होंने इस मिनिस्ट्री को कायम किया। ऐसे कई काम इन्होंने किया।
ہندوستان کی عوام کے لیے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ہندوستان ساری دنیا میں آج ہندوستان کا نام کر کے روشن ہوا ہے، تو ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی طرف سے. Under Dr. Singh's stewardship, several initiatives were taken and launched. National Commission for Minority Education Institutions, NCMEI, was constituted during 2004 under an act enacted to safeguard the educational rights of the minorities enshrined in Article 31 of Constitution. To provide educational advancement of the minority children, Merit Cum Means Scholarships scheme and the post-matric scholarship were launched in 2007, followed by the pre-matric scholarship in 2008 and Maulana Azad National Fellowship Scheme in 2009. Multi-sectoral development program was launched in 2008 and 2009 after identification of the minorities concentrated districts in the country. The Sachar Committee, the Prime Minister's high-level committee on the socio-economic and educational status of the Muslim community, was constituted during March 2005 and is submitted its reports to the November 2006. Sachar Committee made the most comprehensive analysis of the backwardness of the Muslims in social and economic and educational fields. Dr. Manmohan Singh ensured that the recommendation of Sachar Committee are implemented in letter of spirit. قائم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تیقن دیا اور تمام کو مطمئن کیا کہ جو بھی سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، جو بھی سچر کمیٹی نے سبمٹ کیا، اس کو میں امپلیمنٹ کروں گا، اور انہوں نے کیا. The Ranganath Commission, National Commission for Religious and Linguistic Minorities, was constituted during October 2004 to look into the issues of related and linguistic and religious minorities, and submitted a report in 2007 May. The Prime Minister's new 15-point program for the welfare of minorities was launched in 2005. The schemes for the minorities introduced during Dr. Manmohan Singh's regime, including Seeko or Kamao, skill development in 2012, Nai Manzil for the leadership development among women in 2012, and Geo Parsi scheme to check the dwindling population of the Parsis in the country in 2014. میں اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنی جماعت کے دل کی گہرائیوں سے، اپنی جماعت کی جانب سے میرے صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب MP اور حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقررہ تلنگانہ اسمبلی وہ MP کی جانب سے میں ان کے غم میں، ان کے خاندان کے غم میں اپنی دل کے گہرائیوں سے میں شامل ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور منموہن سنگھ صاحب کو جنہوں نے کام کیا اس کے لیے ہمیشہ ساری دنیا میں، ہندوستان میں، ساری دنیا میں یاد رہے. شکریہ. گورو